Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Anand Kodi Vaishnavinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. And Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Siva Sadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Rupa Gopina Shama Radha Kanda Giri Gaura Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Mathura Ki Jai. Navadu Mayapura Ki Jai. Jagannath Puri Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Yajis Mai Ki Jai.
वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। All glory is the Son, all glory is the Son, all glory is the Son, all glory is the Shri Guru Shri Gauranga. Nama Om Vishnu, Hare Krishna, Vijay Bhutale Shrimati Bhakti Chrita Swami Namaste. Krishna Paraya, Rupada Shitanmani, Shri Gaura Karana Shakti Bhakti Chrita. Where is the spirituality, material life? Okay, someone is calling. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhavati Nashtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Agyanatimirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurmitandena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vishnu Savitam Jena Bhutale Swayam Kadamaya Vedati Swapadantikam Vandegam Shri Guru Shri Yuttapadakam Shri Vaishnava Shri Rupam Sarajatam Saranam Raghunatham Sajivam Sadhuitam Sadhutam Vaishnava Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Radhanu Shri Sakyam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Apta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavan Siti Devi Pranamami Haripriya Vanchakal Tarudasya Kripa Sindhyaye Patitan Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Dr. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 भौतिक संसार भोग का एक निकट बंध श्लोक संख्या 8 5 14
Yes. 8. Okay. अनुवाद। कभी कभी यह बद्ध जीव रहने के लिए निवास स्थान ढूंढने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है, निर्धन वणिक जंगल में इसलिए जाता है कि वहां उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकें, जिन्हें लाकर वह नगर में लाभ सहित बेचेगा, किंतु वह अपने शरीर तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण से अपने मूल संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वह मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता और क्रियाकलापों में रहती है। जीवन के जीवन के उद्देश्य को न जानते हुए भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक जगत में जीवन की आवश्यकताओं की खोज में संघर्ष करते हुए निरंतर दौड़ता रहता है। प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण वह कृत्रिम आवश्यकताओं का आविष्कार कर लेता है और अधिकाधिक उलझता जाता है। वह ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें उसे अधिकाधिक सुविधाओं की जरूरत रहती है। भौतिकवादी को प्रकृति की रीति का मर्म ज्ञान नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता 3:27 में पुष्टि की गई है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वथा अहंकार मूलात्मा कर्ता हम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से मोहित जीवात्मा अपने आप को इनका कर्ता मान बैठता है। काम इच्छा के कारण जीवात्मा अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार वह फंसकर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। English translation and purport. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 14. The material world as a great forest. Text number 8. Sometimes the conditioned soul is absorbed in finding residential quarters or apartment and getting a supply of water and riches to maintain his body. Absorbed in acquiring a variety of necessities, he forgets everything and perpetually runs around the forest for material existence. Purport. As originally mentioned, a poor man belonging to the mercantile community goes to the forest to get some cheap wood to bring back to the city to sell at a profit. He is so absorbed in the thought of maintaining body and soul together that he forgets his original relationship with Krishna and seeks only the bodily comfort. Those material activities are the conditioned soul's only engagement. Not knowing the aim of life, the materialist perpetually wanders in material existence, struggling to get the necessities of life. Not understanding the aim of life, even though he acquires sufficient necessities,
He manufactures artificial necessities and thus becomes more and more entangled. He creates a mental situation whereby he needs greater and greater comfort. The materialist does not know the secret of nature's ways, as confirmed in Bhagavad Gita 3:27. Prakriti kriya manani gunayi karmani sarvasaha ankara vimudhatma prataham iti mayate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. Due to a lusty desire, the living entity creates a certain mental situation whereby he wants to enjoy this material world. He thus becomes entangled, enters different bodies, and suffers in them. Hare Krishna. This is typical material consciousness, the conditions souls have in this world. यह एक गंभीर भौतिक स्थिति है इस संसार में जीवों की. Majority of people do not know that we are spirit souls. ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि वे आत्मा हैं. We think we are this body. हमें लगता है कि हम यह भौतिक शरीर हैं. And material life is an extra thing we want to do. और हमें लगता है कि हमें यही भौतिकवादी जीवन ही जीना है. Therefore, people put a lot of effort into trying to maintain this material body. इसीलिए लोग अपने शरीर को चलाने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करते हैं. The nature of material world is that Krishna has arranged everything in such a way that the more we struggle to control material energy, the more we are controlled by material energy. इस संसार का स्वभाव यह है कि जितना ज्यादा हम इस संसार को कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना अधिक हम इस संसार में फंसते चले जाते हैं. We should take care of the body. हमें शरीर का निर्वाह करना है, ध्यान देना है. Because we need this material body. क्योंकि हमारे पास ये शरीर है. But to take care of this body and forgetting taking care of the soul is a big problem. लेकिन इस शरीर का निर्वाह करने के लिए आत्मा को दांव पर लगा देना ये भारी भूल है. Material body cannot be taken care of anyway. इस शरीर का तो हम हमेशा इस शरीर को हम हमेशा संभाल कर रख ही नहीं पाएंगे. Nobody can take care of this body. इस शरीर को हम संभाल नहीं पाएंगे हमेशा के लिए. No matter how hard we try. कितना भी हम अथक प्रयास कर लें. But Gita already told us very clearly. गीता में साफ साफ स्पष्ट किया गया है. That which is temporal. कि जो क्षणिक है. Cannot be maintained. उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते. And that which is eternal. और जो शाश्वत है. Cannot be destroyed. वो कभी खत्म नहीं होगा. Krishna said it very clearly. कृष्ण बहुत स्पष्टता बोलते हैं. But who is hearing? लेकिन कौन सुनता है? Nobody hears. कोई नहीं सुनता. Therefore, we have problems in this material. इसीलिए संसार में हमारे पास समस्याएं हैं. Lord Krishna came in this material world. कृष्ण इस संसार में अवतार लेते हैं. Particularly here in India. खासकर इस भारतवर्ष में. To speak this Bhagavad Gita. या भगवत गीता को बोलने के लिए. For our benefit. हमारे फायदे के लिए. But we are so unfortunate. लेकिन हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं. That we don't care about what Krishna is teaching, what Krishna came to give us. कि हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि कृष्ण हमको क्या शिक्षा देने के लिए आए हैं. Even though we hear this. यानी कि हम यह सुनते हैं.
But we're so absorbed in material consciousness लेकिन हम इतना अधिक संलग्न हैं, लीन हैं that it doesn't enter. कि ये शिक्षा हमारे हृदय में जाती Only नहीं। the sound comes and hits the ear मात्र शब्द हमारे कानों में घुसते हैं and और वापस falls back. फिर गिर जाते हैं It कान doesn't से, enter. वो कान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। Many people don't hear. इसीलिए हम में से बहुत लोग सुन नहीं पाते, And because you're not hearing Krishna, और क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं कृष्ण को, we'll continue to repeat the same process of suffering. इसीलिए यह हम गलती बार बार करते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। To make it worse, और इस प्रकार इसको और अधिक गंभीर बनाने के लिए we are labeling it advancement. हाँ, ये और गंभीरता बन जाता है जब इसको हम बोलते हैं कि यह विकास हो रहा We है। label suffering as enjoyment. इस कष्ट को हम बोलते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, And we fool ourselves like that. और इस प्रकार हम अपने आप को ही मूर्ख बना लेते हैं, That we are enjoying. और इस प्रकार हम भोग करते We रहते हैं। want to adjust material energy. तो हम अपना भोग करने के लिए इस भौतिक शक्ति के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। It is foolishness. यह मूर्खता है। Nobody can adjust material nature. इस संसार में कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकता। Material nature is adjusting all of us भौतिक प्रकृति हमको एडजस्ट करती है at her will, अपनी इच्छा से, and we cannot do anything. और हम कुछ नहीं कर सकते। The only way we can do is to take shelter of Krishna अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मात्र कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। by hearing what Krishna is teaching. और यह कैसे होगा? कृष्ण को सुनकर, जो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। We don't hear लेकिन हम सुन नहीं पाते, because क्योंकि material sense gratification has a very loud voice. क्योंकि ये संसार के भोग हैं, इनकी आवाज बहुत तेज है। It is singing into our consciousness very loud. लगातार हमारे कानों में गूंजता रहता है भोग की भावना। If you put a loudspeaker here, अगर हमको एक बहुत बड़ा यहाँ पर लगाएं any लाउडस्पीकर, sound under will not be heard. तो फिर हम आसपास का कोई भी ध्वनि सुन नहीं पाएंगे। So the voice of sense gratification is too loud in our consciousness. तो भोग वासना की जो गूंज है हमारे कान में बहुत तेज से गूंज रही है, Therefore, we don't hear इसीलिए हम और कुछ सुन नहीं पाते what Krishna is telling us. कि कृष्ण हमारे फायदे के लिए हमें क्या बोल रहे हैं। Every time, हर समय, all the time, हर समय Krishna is speaking. कृष्ण हमको बोल रहे हैं। See the word. देखिए श्रीमद् Krishna भागवत is में speaking. स्पष्टता लिखा गया है, कृष्ण बोल We रहे हैं, don't hear लेकिन हम सुन नहीं पाते because of the noise of sense gratification क्योंकि too loud in our consciousness. क्योंकि यह भोग वासना की ध्वनि बहुत तेज है जो हमारे कानों में गूंज रही है। So we are wasting our time इस प्रकार अपना हम जीवन व्यर्थ कर रहे हैं taking care of the body इस शरीर का देख रेख करने में, and forgetting taking care of the soul. और पूर्ण तरीके से आत्मा का ध्यान आत्मा का देख रेख करना भूल जाते हैं। Prabhupada gave so much analogies, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, so much teachings. बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। We say them, हम उन्हें बोलते हैं, we don't understand them. हम समझते नहीं हैं। We repeat them regularly, हम उन्हें बार बार बोलते रहते हैं, but we don't understand them लेकिन हम वाकई में समझते and we're नहीं not हैं। applying them. हम उसे अप्लाई नहीं करते अपने We जीवन are में। too philosophical हम मात्र दार्शनिक हैं, without application of the philosophy which we speak. लेकिन उसका हमारे जीवन में एप्लीकेशन बहुत कम होता है। Therefore, इसलिए the philosophy जो दर्शन है, is different from us. दर्शन हमारे चरित्र से अलग होता There's है। a great distance between बहुत us. दूरी है हमारा चरित्र और हमारे दर्शन में, So it's not working on us. इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। Therefore, इसलिए although we have the highest, आज जो हमारे पास सबसे उच्च दर्शन है, we still suffer. हम फिर भी कष्ट भोगते हैं, So we have a lot of difficulties और हमें बहुत सारे जीवन में समस्याएं आती हैं because we're not hearing. क्योंकि हम अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। The Prabhupada gave example of a bird in a cage. श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक चिड़िया का गुफा के अंदर। We have heard it many times हमने बहुत बार सुना है and we have spoken about it many times. और हमने इसके बारे में बहुत बार बोला भी है, But we are still doing the same thing. लेकिन फिर भी हम वही काम करते रहते हैं। Look at our activities every day. हम अपने क्रियाकलापों को The देखें, same करते thing हैं। we are doing. हम लोग वही सेम चीज कर रहे हैं रोज। We are speaking it, हम लोग बोलते भी हैं, but we don't do it. We don't do it. लेकिन हम उसको करते नहीं है। A bird in a cage. जो यह चिड़िया है, The cage is being nicely maintained.
उस पिंजड़े को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। That is the body. यह पिंजड़ा शरीर है, The cage is the body. यह पिंजड़ा है, यह शरीर है, The bird is the soul. और चिड़िया है वो हमारी आत्मा है। We are taking care of the body तो हम शरीर का ध्यान तो बहुत अच्छे से and रख रहे हैं, forgetting the soul. लेकिन हम आत्मा को नकार रहे हैं। It's a problem. यह समस्या है। So the bird is dying, तो इस प्रकार वो चिड़िया मर रही है, but the cage is very nicely decorated. लेकिन पिंजड़ा बहुत अच्छे से सजाया गया है। Among devotees हम सब भक्तों में भी who are chanting Hare Krishna, जो हम सब हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, 80% are lonely. 80% लोग अपने जीवन में खाली हैं अंदर से, Insecure of our future उनको बड़ी चिंता है अपने भविष्य की, and depressed. और वो डिप्रेशन में है। Why? क्यों? I'm talking about devotees. हम भक्तों की बात कर रहे हैं, Depressed, वो डिप्रेशन में है, lonely, खाली है अंदर से, insecure. इनसिक्योर है। Why is that? क्यों है? The bird in a cage is not maintained, but the cage is maintained. क्योंकि जो चिड़िया है उसका हम ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं, बस पिंजड़े का ध्यान रख रहे हैं। This story we know about it many times. All हम of लोग us को बहुत have heard सुनते हैं, it. हम लोग बोले हैं, पढ़े हैं So, ये स्टोरी, what sense does it make to us in our daily practice of Christian? लेकिन इसको हम कैसे अपनाते हैं अपने रोजाना के आध्यात्मिक जीवन में? What sense does it make to us? क्या हमको इससे समझ में आता है? We're still depressed. 80% 80% भक्त भी इसी प्रकार से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से, lonely. समस्याओं से, खालीपन से। It's a shame. यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है, Depressed डिप्रेस होना and insecure. और इनसिक्योर होना अपने जीवन में। Why? क्यों? Because the soul is starving क्योंकि हमारी आत्मा तड़प रही है, वो भूखी है, for want of Krishna consciousness. क्योंकि उसे कृष्ण भावना में अच्छी मात्रा में Not मिल रहा है। material necessities. उसे भौतिक चीज नहीं चाहिए, It's for Krishna consciousness the soul is starving. आत्मा को कृष्ण भावना में की भूख है। In the society of sophisticated scholarly devotees, हम इस बहुत सारे महान पंडित और दार्शनिक भक्तों के समाज में भी who are preaching जो प्रचार कर रहे हैं, philosophy, बड़े बड़े दर्शन को, powerful realization, बड़े बड़े साक्षात्कार को, depressed. लेकिन अंदर से डिप्रेशन में है। Why? क्यों? The soul is not nourished. क्योंकि जो आत्मा है उसको भोजन नहीं मिल रहा है। Why the soul is not nourished? आत्मा को भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? Our concentration is on the body, not the soul. क्योंकि हमारा पूरा फोकस शरीर पर हो रहा है। Look at the activities which we do the whole day. देखिए हम लोग दिन भर क्या करते हैं, हमारे क्रियाकलाप How much % of it is spiritual? कितना उसका भाग आध्यात्मिक वाकई में है। What we do the whole day, 24 hours. जो हम 24 घंटा में करते हैं वाकई में कितना उसका पार्ट आध्यात्मिक How है, many % is spiritual for the soul? कितना उसका परसेंट आत्मा के लिए है। How many hours do we sleep? हम लोग कितना घंटे सोते हैं? Out of 24 hours. How many 24 hours घंटे do we में से sleep? How many? I'm asking you, tell me how many hours you sleep. This is practical mathematics. Practical mathematics. 7 to 8 8 hours 8 घंटे minus 24. Right? 24 में से 8 गए, How many remain? 16. 16 घंटे बचे। How many time do we spend in taking care of this body? इस शरीर में कितना समय देते हैं? Cooking, खाना bathing, बनाना, कुकिंग करना, खाना, स्नान करना, and some पेशाब people करना। sleep in afternoon. और कुछ लोग दिन में भी सोते हैं थोड़ा सा। How many hours is that? सब मिला के कितना हो गया पूरे दिन में? 2-3 hours plus 8. That is 11 hours. 11 So घंटे remain हो how गए, many? 13 hours। 13. What do we do with the 13? उसमें हम क्या करते थे? 11 घंटे में काम करते हैं, जॉब। Job. How many hours for the soul? आत्मा को कितना बचा? Huh? 2-3 hours. 2-3 So घंटे बचे आत्मा के लिए। why are we surprised that we are depressed? तो फिर इसमें चिंता, इसमें आश्चर्य क्या है कि हम Insecure. लोग डिप्रेशन में हैं, Insecure. इनसिक्योर हैं। Why are we surprised? इसमें आश्चर्य क्या है? Because we give less time to the most important thing. सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को सबसे कम समय दे रहे हैं We give priority to that which is temporary, which cannot be maintained. और प्राथमिकता उसको दे रहे हैं जो कि खत्म होने वाला है। How long can we keep this body? इस शरीर को हम कब तक बचा के रखेंगे? How long? कब तक?
Look at the energy, amount of energy we put into this body. देखिए हम लोग कितनी ऊर्जा और शक्ति लगा रहे हैं शरीर को बचाने के लिए. Is it not a serious problem? ये बहुत ही गंभीर समस्या है. Krishna consciousness is to change our consciousness, to change our कृष्ण भावनामृत का मतलब है हमारी चेतना में बदलाव, संपूर्ण बदलाव. is to help us see the things we cannot see on our own. और इसमें हमें सहायता मिलनी चाहिए जो हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, वो हमें दिखाएगा कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत. So that we can make a U-turn in our lives ताकि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें and give much time to the soul. और हम प्राथमिकता दें अपनी आत्मा को. The body has no value without the presence of the soul. बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है. So we are struggling so much for this body and forgetting the soul. तो हम इतना कोशिश करते हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए और आत्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं. It is misfortune. यह हमारा दुर्भाग्य है. It is against the principle of nature. यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है. Nature has given the body. प्रकृति ने हमको यह शरीर दिया है. He gave us the knowledge. उन्होंने हमको ज्ञान दिया है. Human body. यह हमको शरीर मनुष्य का जन्म मिला है. For self-realization. मनुष्य का जन्म प्रकृति ने दिया है आत्म साक्षात्कार के लिए. Not for sense gratification. इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं दिया है. For sense gratification. इंद्रिय भोग करने के लिए. Animal does it better than anyone. जो और जीव जंतु जानवर हैं वो और अच्छे से करते हैं. 100% better than anyone. 100% अच्छे से करते हैं इंद्रिय भोग. Is it true? है कि नहीं? सही है. Animal. जानवर. They gratify their senses thousands of times better than human beings. वे अपनी इंद्रिय की तृप्ति हजारों गुना अधिक अच्छे से करते हैं मनुष्यों की तुलना में. Will they spend money to buy a car to travel? क्या वो लोग कुछ कमाते हैं पैसे ताकि उनको कार मिले घूमने के लिए? Animal. जानवर. क्या उनके पास They spend money to buy a car for their journey? क्या वो लोग पैसे खर्च करते हैं कार में जाने के लिए, कार खरीदने के लिए? Are they late for their summer vacation? They are late. लेकिन क्या उनको इंद्रिय भोग में कोई इनको दिक्कत होती है? Animals, are they late? क्या उनको कोई समस्या है इंद्रिय भोग में? In their summer vacation, they are late. वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं अच्छे से. They get everything on time. उनको सब कुछ टाइम पर मिल जाता है. Only human beings are late, always late. हाँ, तो जो मनुष्य हैं जो लेट होते हैं. With all our hard struggle, और इतना सारा मेहनत करने के बाद भी we are always late. हम हमेशा तकलीफ में होते हैं. So the message is that self gratification is not for human beings. तो संदेश यह है कि इंद्रिय भोग मानव जीवन के लिए नहीं बना है. It is for animals. यह जीव जंतु पशुओं के लिए बना है. It is this fifth canto Lord Samdev explained this very carefully to his sons. इसी पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभ देव बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं. My dear sons, मेरे पुत्रों, don't waste your time for activities which is common for all species of life. Don't waste your time for it. अपना समय उन क्रियाकलापों के लिए व्यर्थ मत करो जो कि और सभी जीव जंतुओं के लिए बना है. Do something which is not common for other entities. कुछ ऐसा करो जो और योनियां नहीं कर सकती हैं. Transcendental austerity. वो क्या है? दिव्य तपस्या. Spend the time to search for the self-realization. अपने समय को लगाइए दिव्य तपस्या करने में ताकि हमें and God realization. और भगवान का साक्षात्कार करने में. That is the difference between human beings and the animals. और यह है अंतर और सारी योनियों में और मनुष्य में. Don't waste your time. अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए. For that which is easily available for all species of life. जो कि साधारण तरीके से और योनियों के लिए उपलब्ध है. Do something which will purify the soul. कुछ ऐसा करो जो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण कर सके. Prabhupada gave lecture on this verse. प्रभुपाद जी ने इस पर एक लेक्चर दिया है. And he said, और वो बोलते हैं, why the heart should be purified? क्यों हमें करना है अपने हृदय को शुद्ध? Because the heart is dirty. क्योंकि हमारा हृदय गंदा है. Our struggle for sanctification makes us dirty.
जो ये हमारा कष्ट हम भोग रहे हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, इससे हमारा हृदय गंदा हो चुका है। So we need to remove those debts. तो हमें सफाई करनी है, मार्जन करना है। The process is called austerity. और वो जो तरीका है वह है तपस्या, That is Krishna consciousness. और वह तपस्या है कृष्ण भावनामृत। Let us take our Krishna consciousness very seriously. अपने कृष्ण भावनामृत को अत्यधिक गंभीरता से लें, Very, very seriously. बहुत गंभीरता से इसको हम लें। So forget all the necessary things that have nothing to do with us. जो हमें आवश्यकता नहीं है उन सबको हमें भूल जाना चाहिए। Let us pursue something which is very, very authentic, और उसकी तरफ आगे बढ़े जो प्रामाणिक है, which is beneficial, जो हमारे लिए फायदेमंद है, that is not going to give us opportunity to stay the place where our suffering continues. और इस प्रकार हमारी जो कष्ट है, हमारे जो दुख है, वो सब खत्म हो जाएंगे, हमें ऐसा स्थान मिल जाएगा। We'll go to a place where हम ऐसे स्थान enjoyment जाएंगे is eternal. जहाँ पर आनंद शाश्वत है, बढ़ता ही जाता है। This is of Dev's instructions. यह भगवान ऋषभ देव के आदेश है। Let's go to that place where enjoyment is eternal. चलो ऐसे जगह चलें जहाँ पर आनंद ही आनंद है। Forget about trying to find water in the desert. और रेगिस्तान में जल को ढूंढने में समय व्यर्थ न करें। There's no water in the desert. वहाँ पर जल नहीं है रेगिस्तान में। If it is desert, अगर वो मरुभूमि है, there's no water there. वहाँ पानी नहीं है। If it is this material world, अगर ये संसार है, there's no enjoyment here. इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। It is in the spiritual world. यह आध्यात्मिक जगत में है। For those who are spiritually realized. तो जो लोग आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कारी हैं, So we should not waste our time. हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। Taking care of this body which cannot be taken care, cannot be शरीर maintained. का भरण पोषण निर्वाह करने में जो कि हम कर भी नहीं पाएंगे। We should take care of the soul. हमें अपनी आत्मा का निर्वाह करना है। That is essential. यह अति आवश्यक है। And this is the teachings of the Gita. यही गीता का सिद्धांत है। And Krishna very, very carefully gave it to us. भगवान कृष्ण ने हमको बहुत अच्छे से इसको दिया है। And our acharyas are maintaining it. और हमारे आचार्य उसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। Let's follow it. इसको पालन करना है हमें। Our benefit अपने फायदे के लिए and others. और दूसरों के फायदे के लिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना पड़े किसी की, पूछ सकते हैं महाराज जी से। Yes, Prabhu. Hare Krishna. Maharaj, whenever like any devotee asks me something or any journey asks me about if they are facing any wrong desire, then I try to help them by quoting Shastra or whatever I heard from Parampara. But after that, I see that the same kind of desire started coming in me, and it becomes very tough to overcome by it. Last time I have asked you, that time you told that try to get some engagement also. That may help. But for some time it helps, and when little empty time I get, again it starts pulling me down. So how to come out of this problem? Because people think that we have spent years, so we have now become pure, but reality is different. So we want to help them also, and also I want to make myself purified. So what should I do to come out of these problems? जब बहुत वर्ष हमारे भक्ति में बीत जाते हैं, हमें लोग समझते हैं कि हम सीनियर हैं, बाहर के लोग भी, अंदर के भक्त भी, और वो हमसे सलाह मशविरा करते हैं अपने जीवन की समस्याओं के बारे में। और जब हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ऐसा होता है कि वो समस्या हमारी बन जाती है सॉल्व करने के बजाय। किस प्रकार इसको हम अच्छे से डील कर सकें कि हम उनकी हेल्प भी कर सकें और अपना हृदय भी शुद्धिकरण कर सकें। The question that non-devotees come to ask us, जो प्रश्न भौतिकतावादी लोग हमसे पूछने आते हैं,
It's Krishna who sent them to come and show us the mirror of what we are. या कृष्ण ने उनको भेजा है हमें दिखाने के लिए हम अपनी भक्ति में कहाँ पर हैं। Not necessary for themselves. जरूरी नहीं कि वो अपने लिए पूछ रहे हैं प्रश्न, It is what we are. या हमारे लिए है। So Krishna is very, very kind. भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, So we don't see what is on the face. तो हम देख नहीं पाते सामने क्या चल रहा है, So to see, we need a mirror. तो हमें उसके लिए चाहिए दर्पण चाहिए। So Krishna sent them, go and tell him what he is. तो कृष्ण भेजते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम कहाँ पर हैं। So they come and ask us questions. तो वो हमसे प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के, And then, if we're very sincere, we'll start to struggle with it. अगर हम वाकई में ईमानदार हैं तो हमें कष्ट होता है, चिंता होती है कि हम कैसे इसको उत्तर दें, क्या दें, And we try to say something. और हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। And after that, उसके बाद so we're reflecting on that. हम अपने आप में चिंतन करते हैं, I have this same situation. ये समस्या तो हमारी भी है, This is our culture यह हमारा संस्कृति है of always being reminded by Krishna, कि भगवान कृष्ण हमको हमेशा याद रखते हैं by sending different people to come and remind us about what we should do. अन्य अन्य प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास ताकि हमें क्या करना है इसकी याद दिलाने के लिए। I just remember a very common pastime. Very हमें common pastime. याद आ रही है एक लीला, Common is that it's something we have had many times also. क्योंकि हमने इसको बहुत बार सुन रखा है, इसको कॉमन बोल रहे हैं। A lady brought her son to a sage. एक औरत अपने बेटे को लेकर आई एक साधु के पास। My son is eating too much sweet. Please tell him to stop. मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, कृपया कुछ ऐसा करिए कि ये मीठा खाना बंद कर दे। So the sage told her, come back after a week. साधु ने बोला एक हफ्ते बाद आइए आप। So she came after a week. फिर वो एक हफ्ते बाद आई। So he told the boy, साधु ने बोला उस बच्चे को, my dear boys, stop eating too much sweet. प्रिय मित्र, तुम अब मीठा खाना बंद करो, ज्यादा मीठा खाना। Now you are enjoying it. अभी आपको तो मजा आ रहा है, Later on you are going to pay very heavily for it. लेकिन बाद में आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। The boy said, yes, बच्चा बोला हाँ I will stop. ठीक है, आज से बंद कर दूंगा। So the lady was surprised. तो माता जी बोली In 1 क्या हुआ? minute, 1 minute, मात्र एक मिनट की बात थी, you convinced my son to stop eating sweet. मेरा पुत्र मात्र एक मिनट में मान गया मीठा ना खाने के लिए, Why did it take a whole week to लेकिन do आपको it? एक हफ्ता क्यों लग गया? So he said, the time came, साधु ने बोला जब आप आई थी I was also addicted to sweet. तब मैं भी बहुत स्वीट खाता था, Because I don't want to be hypocrite. क्योंकि मैं इस प्रकार का झूठा नहीं So बनना चाहता था। I should come after a week. इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक हफ्ता बाद आइए, So that I have stopped eating sweet before you came. और इस एक सप्ताह में मैंने मीठा खाना बंद कर दिया है। And because I have stopped eating, क्योंकि मैंने बंद कर दिया मीठा खाना, when I spoke, तो जब मैंने बोला it has an effect in your son. तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, Because I'm not hypocrite. क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूँ And I'm now teaching what I'm doing. और अब मैं वह शिक्षा दे रहा हूँ जो मैं पालन कर रहा हूँ। That is what we should be. और इस प्रकार हमको भी ऐसा होना चाहिए। We should tell people the things we know it is wrong, but we are also not doing it. हमें लोगों को यह बोलना चाहिए कि हम भी ये नहीं कर रहे हैं और ये गलत है, That is proper. यह उचित होगा। It is called bona fide. इसे बोलते हैं प्रामाणिकता, Because we are not cheaters. इस प्रकार हम धूर्त नहीं होंगे। So in this pastime, we should learn. तो हमें सीखना है इस लीला से। He prepared himself to represent these teachings perfectly. उन्होंने अपने आप को तैयार किया उस शिक्षा को सही सही ढंग से देने के लिए। We have decided to be a devotee. हमने निश्चय किया है कि हमें भक्त बनना है। Nothing is wrong इसमें कोई गलत बात नहीं by है। being a good devotee. अच्छा भक्त बनने में कोई गलत बात नहीं है, Nothing is wrong with that. कोई गलती नहीं है। So let us be a good devotee. तो फिर हम एक अच्छा भक्त बने। How do we be a good devotee? कैसे बनेंगे अच्छा भक्त? Follow
what the Guru say completely, no interpretation. जो आपके गुरु ने कहा है उसको एज इट इज पालन करें, उसमें कोई जोड़ तोड़ने के न करें। should have faith. हम उनमें दृढ़ विश्वास रखें। And what order we get from the spiritual master, we should have faith. जो हमको आज्ञा मिली है गुरुदेव तो उसका पालन करें। We should know हमको पता होना चाहिए this is very, very good for me. कि यह आज्ञा मेरे हित के लिए है, Therefore, I should do it. इसलिए मुझे करना है। If we have that faith अगर हमें यह विश्वास होगा and follow it, और हम करेंगे, we will always be successful. हम हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। We should be successful. हम सफल होंगे। Because that instruction came from the pure heart of the sadhu. क्योंकि यह आदेश एक साधु के निर्मल हृदय से उपदित हुआ है। Out of compassion for us, करुणावश हमारे लिए they are speaking वो बोल रहे हैं, to help us. हमें सहायता करने के लिए। Therefore, we should appreciate that इसलिए हमें उसकी सराहना करनी है, by following it very nicely. उसको पालन करके अच्छे से। It is called parampara. इसे परंपरा बोलते हैं। Where we follow it for some time and it works and we don't continue. हम कुछ दिन तो पालन करते हैं, हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन बाद में हम नहीं कर पाते Because we are not serious about it. क्योंकि हम गंभीर नहीं इसके लिए। If we are serious about it अगर हम गंभीर होंगे and we saw it is working, और हमें जीवन में काम कर रहा होगा we should follow. तो हम करेंगे रोज। We should not listen to the mind. हमें अपने मन को नहीं सुनना चाहिए, Listen to what Guru said, वह सुनना है जो गुरु बोल रहे हैं, what the scripture said. जो शास्त्र बोल रहे हैं, That is what we should listen. We should listen to them, not our mind. उसे सुनना है हमें। गुरु शास्त्र को सुनना है, मन को नहीं सुनना अपने। If our mind is so powerful, अगर हमारा मन इतना महान होता why we should go to Guru? तो फिर हम क्यों जाते गुरु के पास? So let's continue to worship our mind तो फिर चलो अपने मन की पूजा करें, and don't go to the Guru. Should not go there. तो फिर गुरु के पास मत जाइए, मन की सुनिए। Don't waste his time. Worship our mind तो फिर आप उनकी पूजा मत कीजिए, अपने मन की पूजा कीजिए and remain under the torture of the mind. और हमेशा मन के कष्ट सहते रहिए। The mind will torture us regularly. मन हमको हमेशा कष्ट में डालता रहेगा, दुख में डालता रहेगा। That's what we get from the mind. That is all we get from the mind. यही हमको हमारे मन से मिलता है, मात्र तकलीफ, दुख, कष्ट, Nothing wonderful. और कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। So we shouldn't listen to the mind. हमें अपने मन को नहीं सुनना है, Listen to Guru. सुनना है गुरु को, Listen to the scriptures. सुनना है शास्त्र को, Listen to Krishna. सुनना है कृष्ण को, We'll be successful. और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। Yes, Hare Krishna. Last time we met, so you told me that Krishna has designed everything so that there is a learning in everything. He wants to teach us from everything. Yes. So, Maharaj, how can we develop a perspective that we learn from every situation in our life? How can we see what that situation has to teach us? हम हर परिस्थिति में यह कैसे देख सकें कि भगवान कृष्ण हमें कुछ न कुछ वहां से सिखा रहे हैं, यह एटीट्यूड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? Introspection. आत्मचिंतन, आत्ममंथन। We should ask Krishna, हमें पूछना चाहिए कृष्ण से, teach me the lesson you want me to learn in this. आप मुझे वह शिक्षा दीजिए जो आप देना चाहते हैं इस परिस्थिति से। We should communicate with Krishna. तो हमें ऐसा कृष्ण के साथ बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। He's a person. वो व्यक्ति हैं And he purposely arranged that for us. और उन्होंने जानबूझकर हमारे लिए स्थिति डाली है। So if we ask him, तो उन्हें हम पूछें, he will tell us. आपको हमें वो जवाब देंगे। So ask. पूछिए आप कृष्ण को, Be conscious of that. So ask. आप उसका चिंतन करिए कि क्या हो रहा है, What lessons will I learn? इस स्थिति से हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा मिलती है। We should introspect. तो ये आएगा आत्मचिंतन करके। Without introspection, बिना आत्ममंथन के, without contemplation, बिना आत्मचिंतन के no realization. कोई साक्षात्कार नहीं आएगा। Right?
ठीक है, कोई और प्रश्न है? कमेंट? Maharaj, thank you very much for giving this wonderful class. So I have this question. You mentioned about the material body cannot be maintained because it is temporary. So in my experience, I have observed that if I try to do something beyond my bodily capacity, suppose then my health goes down, and then if my health goes down, I try to take care of my body, and then I get caught up in that, like trying to take care of. So this words, right? The body cannot be maintained because it is temporary. How to understand it? Like when we are not doing physically well, is it my lack of faith that I get caught up in the physical body, or is it not being able to understand? Like suppose if I am not doing physically well, like I'm not doing, suppose I'm sick, but then also if I keep on continuing ignoring the body, eventually I'll be more sick than I was, right? So ignoring the body too much or taking care of the body too much, I mostly fall into either two categories. So Maharaj, how to? Thank you. प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने कक्षा में बताया था कि ये शरीर तो वैसे भी हम बचा नहीं पाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो इसका देख रेख बहुत अधिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम अपने शरीर का देख रेख नहीं करते हैं तो कभी कभी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जब हम उस स्वास्थ्य को देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम शरीर को ही देखते रहते हैं और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो कम हो जाता है। ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, इसको हम कैसे मेंटेन करें? We should take care of the body, हमें शरीर का ध्यान रखना है, but not at the expense of the soul. लेकिन आत्मा के दांव पर नहीं। Should balance. हमें उसको बैलेंस करना होगा। Second thing, the problem is the mind. दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन। The mind मन tells us that मन बोलता है हमें, if you wake up at 3 o'clock, अगर आप सुबह 3 बजे जल्दी उठ जाओगे, you'll be sick. आप बीमार पड़ जाओगे। And we are convinced. और हम इसको बिल्कुल मान लेते हैं। If you do that, you'll be sick. ऐसा करेंगे तो हम पक्का बीमार होंगे। Because the man have accepted it. क्योंकि मन ने यह स्वीकार कर लिया है। Then the conclusion is, oh, I'm sick because I woke up too early. तो निर्णय क्या निकालते हैं हम? क्योंकि हम सुबह 2 बजे उठ गए थे इसलिए बीमार पड़ गए। The mind will not tell us मन यह नहीं बोलेगा that कि there are people who are getting up 1 o'clock. They are not sick. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 बजे उठते हैं, सोते भी नहीं हैं और वो बीमार नहीं पड़ते। The mind will not tell you those people. मन आपको उन लोगों के बारे में नहीं बोलेगा। It will tell you only you are 3 o'clock. मन मात्र ये बोलेगा आप 3 बजे उठ गए इसलिए बीमार हो गए। And we believe it fully. और हम पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं। Yes. हाँ, Doctor confirmed it. डॉक्टर ने यही कहा है। As soon as doctor touched my body, जैसे डॉक्टर हमारी नाड़ी चेक की, you waked up too early. तुम बहुत जल्दी उठते हो, इसका कारण अज्ञान हो रहे हो। Go and take rest. थोड़ा आराम करो अच्छे से। The mind. मन, We already said you shouldn't listen to the mind. हमने पहले ही कहा था हमें अपने मन को नहीं सुनना है, अभी कहा था पीछे। It is not about acting whimsically. We have to balance it. ऐसा नहीं है कि हमें किसी प्रकार से भी काम करना है, हमें बैलेंस करना है। Because we have a weak mind, क्योंकि हमारा मन कमजोर है, shouldn't jump too high. तो हमें एकदम छलांग लगानी है। So let's do it gradually. तो हमें धीमे धीमे क्रमशः बढ़ना है। As we continue to grow, then we can increase also. और जब हम धीमे धीमे बढ़ते रहेंगे तो हम ऊंचाइयों तक पहुंचते रहेंगे। Hare Krishna. The purport, it was mentioned that this mercantile person he goes to the forest to bring the cheap food and sells it at the higher price. So, likewise, we do our jobs, we earn money, and I'm observing in my life as I'm growing, as I'm accumulating more wealth, my
my ego is also disturbing, and it is reflecting in multiple aspects of life. How to keep in check this tendency of uh, not being egoistic when wealth is increasing in life. आप हिंदी बोलो सो महाराज प्रश्न है कि जैसे जैसे स्वयं के पैसा हम लोग कमाने करते हैं और पैसा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है, और ये बढ़ता हुआ अहंकार हमारे जीवन के दूसरे एस्पेक्ट्स में दिखने लगता है, तो हम इस प्रवृत्ति को कैसे ध्यान में रखें? Everything is a package. It's a package. It's a puzzle. सब कुछ आपस में पूर्ण है, पैकेज है. Very difficult to find a wealthy person who is humble. या बड़ा कठिन है एक अमीर आदमी विनम्र भी हो. Difficult. दुर्लभ है, Very, very rare. बहुत दुर्लभ है, Because it's part of the things. They all go together. क्योंकि यह ऐसे ही डिजाइन किया गया है. I'm very rich. मैं बहुत धनवान हूँ. Prabhupada use the word status quo. Status quo. Status. Want to maintain the status. प्रभुपाद जी यह शब्द यूज किए थे कि हम अपना जो स्थान है वो चाहते हैं समाज में बना रखना. What is that? तो मतलब क्या है? False ego. अहंकार. I want to maintain my status. मैं अपनी स्थिति को बनाना चाहता हूँ. Nobody should come here. मेरे बराबर कोई आना चाहिए. Nobody should be above me. मेरे कोई ऊपर नहीं होना चाहिए. Everybody should be down there. सब लोग हमसे नीचे रहें. So I can control. ताकि मैं सबको कंट्रोल कर सकूं. For every wealthy person, that is there. सभी धनवानों के लिए क्या होता है? We had some members. हमारे कुछ लोग हैं. So I was asking them to put their company in our magazine. हम उनसे पूछ रहे थे कि वो लोग अपनी कंपनी को हमारे मैगजीन में डालें. So I made one of them who said, "Don't put my name. Don't put my name." तो उनमें से एक बोला नहीं मैं नाम मत डालिए. You can put the company. Don't put my name. मैं नाम मत डालो, आप कंपनी को डाल दो. I'm very humble. Don't put my name. मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं नाम मत लिखो. I say yes. मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है. And we printed the magazine. हमारी मैगजीन बाहर निकली प्रिंट होकर. I put his name there. उनका नाम डाल दिया. When I gave him the magazine, जब उनको वो the दिया मैगजीन, first thing is I went his name सबसे पहले उनकी आँख अपने नाम पर गई to see whether his name is there or not. कि उनका नाम था कि नहीं था. When he saw his name, तब देखा मेरा नाम. he was happy. If his name was not there, he wouldn't have sponsored again. The next one, he would never sponsor it. अगर उसका नाम नहीं होता तो दोबारा वो पैसा नहीं देता. He was very happy to see his name. बहुत खुश हुआ अपना नाम देखकर. And I put his name first. और हमने उसका नाम सबसे पहले डाला था. Very difficult to find a wealthy person who is humble. Very difficult. बड़ा कठिन है धनवान व्यक्ति और विनम्र होना. Extremely rare. बहुत अत्यंत दुर्लभ. So we should constantly hear. हमें हमेशा श्रवण करना होगा. If we hear constantly, अगर हम निरंतर श्रवण करेंगे, one day एक दिन we will hear. सुनेंगे. That day, उस दिन our life will change. हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा. So let's continue to practice hearing तो रोज नित्य श्रवण करते रहें until we hear. जब तक एक दिन हम सुन लें. आप Then वाकई में there will be change in our जिस दिन सुन लेंगे उस दिन हम बदल जाएंगे. So Prabhupada ki, Jai Gaura Pramanand, all glories